So, shall we start? Yes, pizza. Yes, sir. The screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. So today we will have the revision on chapter number 2, that is a linear software project estimation. So there are different method of cost estimation when you are going to develop a particular software or any application. At that time there must be some methodology, or there must be some model, so that you can estimate the cost of particular projects. So there are various different method, or you can say the various technique. By using that technique or method, you can estimate the cost of project. You can estimate the project in the various unit. Means you can estimate the project in the unit of efforts. Efforts means how much efforts is required to complete the project, or how much efforts is required to हॅलो complete सर. the. Yes, yes, yes. सर तुमचा आवाज एकदम स्लो येतोय. अभी आ जाएगा. यस, अभी आ रहा है. खास क्लियर आ रहा है अभी. येस येतोय सर. सर. येतोय. Okay. So there are various technique or various method for cost estimation. So first we can see the COCOMO model. We have already seen the COCOMO model. That particular model is proposed by Bohem. That is a constructive cost estimation model. That is a COCOMO model. This particular model is proposed by Bohem in 1981. So COCOMO is one of the most generally used software estimation model in the world. Means in the world, to estimate the general software, how much cost or how much efforts is required to develop that particular project or software. So for that particular activity, most of the person or most of the organization use this particular COCOMO model. It is a fast technique. If you know how much line of code is required to develop that particular project, at that time by using this model, you can easily estimate the cost, you can easily estimate the effort, you can easily estimate the time required to complete that particular project. Are you getting? So for that particular purpose, you must know how much kilo line of code is required to complete that particular project. Okay. So there are some necessary steps in this particular model. If you want to estimate the project cost, if you want to estimate how much efforts is required in the unit, that is person month. All of, I think all of you aware about what is PM. PM means person month. What is PM? Anyone, any student can give the brief about PM. What is PM? Person month. Person. यस यस यस, बोलिए. क्या होता है वो पर्सन मंथ? हाउ वी कैन कैलकुलेट पर्सन मंथ? सपोज देर आर थ्री डेवलपर हु इज वर्किंग फॉर 4 months on a particular project. So how much a person month is required to complete that particular project? Three developer working for 4 months, continuously working for 4 months, and completed the particular project. So what is the person month of that particular project or software? 12 month sir. Yes. How 12 many? month. Very good, very good. 12, very good. So necessary steps in this particular model, if you want to estimate the person month, means if you want to estimate the cost, if you want to estimate the efforts, if you want to estimate how much time is required to complete that particular project, at that time you just
initial estimate, you can have the equation which is proposed by Bohem, which is given by that Bohem. You have to just put how much kilo line of code is required to complete that particular project. You just put the KDLOC in that particular formula. The formula is very simple. E is equal to A into KDLOC raised to B. Means if you in a position to know about, if you in a position to or if you have the knowledge how much kilo line of code is required to complete that project, at that time you can initially estimate the efforts which is required to complete that particular project. You have to just put the value of KDLOC in that particular formula. So the formula is EI is equal to A into KDLOC raised to B. So here A and B are the constant which is already given by that particular Bohem. So there are different type of categories of that particular project. For that particular categories, the value of AB is different. So that particular Bohem, or you can say that particular cost constructive model, categorize the particular project into three categories, or classify the project into particular three categories. The first one is organic, second one is semi-detached, and third one is embedded. So for each and every project there are a different equation. For organic you have the different constant, you have to put the constant, you have to put the value of that particular constant, that is A1, A and B. If you know how much kilo line of code is required to complete that particular organic project, at that time you can easily find out the cost or the efforts required to complete that particular project. So there are three types organic. So हम किस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट कहेंगे, आप सबको पता होता है, आप पता है शायद किसको बोलेंगे? जो प्रोजेक्ट मीन्स वेरी सिंपल, that particular project is a well understood application program, and the size of development team is very small, the team member is experienced and have the knowledge on a similar project, have completed the similar projects. So that is a organic project. उसकी टीम की साइज छोटी होती है, प्रोजेक्ट की साइज छोटी होते हैं. सो एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर वेरी सिंपल, मीन्स सिंपल business system, simple inventory management system, and data processing system. These are the means you can say the class of, means category of a project that is a organic project. Understood? इसकी किलो लाइन ऑफ कोड कितनी हो सकती है? एनीवन? मैंने आपको बताया ये कितना KLOC का प्रोजेक्ट हो सकता है, ये ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट. यस 2K to 50K. KLOC to 50K. yes yes 0 to 50 KLOC. Am I right? Very good, very good. Just a moment. So if your KDLOC is between 0 to 50, so you can say this is a organic type of project. And to calculate how much efforts or how much time is required to complete this type of project, you have to just put the value of your KDLOC in that particular formula. Okay, so you are in a position to get the actual means cost or the efforts or the time required to complete that particular project. Second, that is semi-detached. Second type of project, or you can say the second category of that particular project is semi-detached. कौन बता सकता है मुझे सेमी डिटैच प्रोजेक्ट क्या होता है? एनीवन? बोलिए फास्ट. यस यस अक्षय. एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ होता है सर उसमें. और वेरी गुड. यस वो जो 50 to 200. नहीं, 50 to 300.
The kid, 300 तक the के एल KLOC is between और 50 to 300. Very good. Or yes, Manisha, न्यू आपका आपका ये नाम सर बताइए, उसमें आपका नाम डेटाबेस बताइए. मेघा मेघा देशमुख। हाँ, मेगा. यस, मेगा, बोलिए. सर उसमें न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और डेटाबेस भी मतलब The example of that particular semi-detached system is a new operating system. If you are going to develop a new operating system, that is a type of semi-detached product. If you are going to develop the data management system, that is a DBMS, it is an example of semi-detached. And if you are going to develop the complex inventory management system, this is also the example of semi-detached type of project. Are you getting? यस सर Very good, very good, यस सर। very good. Next, that is embedded project. अभी ये एम्बेडेड प्रोजेक्ट क्या होता है? अभी आपने सुना होगा कि आपके दोस्त फॉरेन में गए या अमेरिका में उसको प्रोजेक्ट के लिए भेजा है. सो व्हाट इज दैट? सो एम्बेडेड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू डेवलप एट द कस्टमर साइट. आर यू गेटिंग? फॉर एग्जांपल एटीएम होता है, जैसे कि कुछ एयरलाइंस के प्रोजेक्ट होते हैं. सो यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एट द कस्टमर साइट. आपने सुना होगा कभी आपका दोस्त को फॉरेन में एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसको भेजा है, इंग्लैंड में गया है या यूके में गया है. सो दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज एम्बेडेड. ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. And this particular type of software or project is being developed strongly coupled to a complex hardware, and the you have to integrate the software application and your complex hardware. The example of that particular embedded system is ATM and air traffic control. So to execute or to develop this type of project, you have to visit the customer side. You have to develop this particular project at the customer side only. This is the embedded system, and this type of project is very complex. It is not so easy. And if you see the KLOC of that this particular type of project, it is above 300. If your KLOC is above 300, then you can say it is a embedded type. ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं. एक कस्टमर के साइट के ऊपर ही जाके आपको डेवलप करना पड़ता है. अंडरस्टूड? So these are the different three categories of the particular project: organic, semi-detached and embedded. अभी हमारे पास तो ये तीन कैटेगरी आ गई, उसका इक्वेशन आ गया. आर यू गेटिंग? अभी हम आगे जाते हैं कि भाई हमको तो पता चला कैटेगरी कौन सी है प्रोजेक्ट की, हमारे पास मॉडल भी है, कॉस्ट एस्टिमेट कैसी करनी है. बट इस कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए कुछ स्टेजेस है क्या नहीं? जैसे कि आपके पास आ गया कुछ सेमी डिटैच प्रोजेक्ट या एम्बेडेड प्रोजेक्ट, और आपको पता है भाई संकेत, आप मुझे ये बताओ कि आपके इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी. दिस इज द टाइप ऑफ एम्बेडेड प्रोजेक्ट. व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? तो इसके लिए संकेत क्या करेगा? कुछ तो भी स्टेजेस ए करेगा. So that particular bohem proposed stages to estimate the cost. अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है. अभी फर्स्ट स्टेज है बेसिक मॉडल. आप क्या अप्लाई करोगे? पहले बेसिक मॉडल, कोकोमो का बेसिक मॉडल अप्लाई करोगे, उसका एफर्ट्स कॉस्ट निकालोगे. देन सेकंड स्टेज यू कैन अप्लाई द इंटरमीडिएट मॉडल, and third one, that is a detailed model. So by using this three particular model, you are in a position to estimate the cost of software. You are in a position to estimate the cost of that particular project. So you have to go step by step to this particular three stages: first basic model, intermediate model and a detailed model. प्रोजेक्ट कौन सा भी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इंटरमीडिएट हो या एम्बेडेड हो,
आपको ये 3 स्टेज आपको यूज करना है, बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल एंड डिटेल मॉडल. So my dear student, we will see the basic Kokomo model. What is the basic Kokomo model? So that particular Bohem has given a formula to calculate the cost of project in this particular basic Kokomo model. The formula means if you want to calculate the efforts, for that particular project or software, the formula is very simple: A1 into KLOC raised to A2, and it will give in the unit of PM. PM is nothing but it is a unit of a measurement of efforts which is required to complete the project. Are you getting? Yes, sir. वेरी गुड. तो बेसिक मॉडल के लिए ये अपना पास फॉर्मूला है, वो बोहेम ने दिया हमें. इफ यू वांट टू एफर्ट्स बाय यूजिंग द बेसिक कोको मॉडल, एफर्ट्स इज इक्वल टू A1 इंटू KLOC रेस टू A2. यहाँ पे ध्यान दीजिए, A2 जो है ये यूनिट, दिस A1 एंड A2 इज द कांस्टेंट विच इज ऑलरेडी गिवन by the Bohem, which is already proposed by that particular Bohem. You don't have to put, you have to put only the value of KLOC. So you can get the efforts in the unit of PM. So this is for if you want to efforts in a basic model, this is the formula. And if you want to estimate the duration or the time which is required to complete that project, for that particular estimation of time to complete the project, the formula is B1 into efforts raised to B2. Means you have the formula for the efforts. First you have to calculate the efforts, then efforts आपके पास आने के बाद आपको खाली you have to put the value of efforts in the unit of PM in that particular formula. Then you are in a position to know how much time or how much month is required to complete the particular project, that is TDV. So B1 into efforts raised to B2, you will get the particular months, how much particular months is required to complete the particular project. So this is about the basic Kokomo model. So KLOC is the estimated size of the particular software project indicated in the kilo line of code. A1, A2, B1, B2, these are the constant for each group of software product. अभी ये जो वैल्यू है मैंने आपको बताया बेसिक मॉडल में, एफर्ट्स के लिए इक्वेशन है, ड्यूरेशन या टाइम एस्टिमेट करने के लिए इक्वेशन है, बट सबका क्या है, अलग अलग है. मीन्स ऑर्गेनिक के लिए A1 और A2 की वैल्यू क्या है, अलग है. सेमी डिटैच के लिए A1 A2 की वैल्यू अलग है. एम्बेडेड प्रोजेक्ट के लिए A1 A2 की वैल्यू अलग है. सो दीज आर द कांस्टेंट वैल्यू which is given by the Bohem and which is different value for each type, each categories of particular project. ऑर्गेनिक के लिए अलग, सेमी डिटैच के लिए अलग और एम्बेडेड के लिए अलग है. अंडरस्टूड? यस. Yes, sir. ओके. सो ऑर्गेनिक के लिए फॉर्मूला है एफर्ट्स इज इक्वल टू 2.4 इन ब्रैकेट KLOC रेस्ट टू 1.05 एंड PM. अगर आपके पास ऑर्गेनिक टाइप का कुछ एग्जांपल आया और आपको बोला अरे फिजा ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको बताइए आप कितना एफर्ट्स लगेगा ये कंप्लीट होने के लिए, या कितना कॉस्ट लग सकती है इसको, आप बताइए इन द यूनिट ऑफ PM. So you have to just put how much KLOC is required to complete that particular project. आप खाली उसमें वैल्यू डालेंगे और उसको बताएंगे दिस इज द PM required person month required to complete your project if your project is organic type. Are you getting? सेमी डिटैच के लिए ये एफर्ट है, एफर्ट्स इज इक्वल टू 3.0 KLOC रेज टू 1.12 PM. एंड एम्बेडेड के लिए ये फॉर्मूला है. सो यू हैव टू जस्ट पुट द value of KLOC for each and every type of project. So you can get the basic Kokomo model, means you can complete this particular first stage.
Understood? Are you getting? Yes? हाँ नहीं बोलिए Yes, sir. आगे जाने के Yes, लिए. sir. Yes, sir. ओके ओके थैंक यू. अभी ये हो गया, ये किसके लिए हो गया? एफर्ट्स का हो गया टाइम. एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स, कितना एफर्ट्स लग सकता है. ऑर्गेनिक के लिए ये फार्मूला है, सेमी डिटैच के लिए ये फार्मूला है, नहीं कि नहीं. एम्बेडेड के लिए ये फार्मूला है. अभी एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम, ये क्या होगा? एफर्ट्स का फार्मूला होगा. अभी टाइम के लिए भी ऑर्गेनिक के लिए ये फार्मूला है, कितना टाइम लगेगा. खाली आपको एफर्ट्स के वैल्यू डाले, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा. जैसे कि हमने पहले इक्वेशन में यहाँ पे एफर्ट्स कैलकुलेट करेंगे ऑर्गेनिक के लिए, ये जो आंसर आएगा वो क्या करना है? खाली इस ऑर्गेनिक में उसको कितना टाइम लगता है वो एफर्ट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. देन यू कैन get how much particular months is required to complete the organic type of project. So these are the formula which is given by Bohem. Organic के लिए अलग, semi detached के लिए अलग, embedded के लिए अलग. Efforts के लिए 3 फार्मूले अलग है, organic के लिए, semi detached के लिए, embedded के लिए, और टाइम, कितना टाइम या डेवलपमेंट टाइम लगता है उसके लिए अलग अलग है. So this is we have already seen. We have seen the particular example. Suppose the project was estimated to be 400 KLOC. 400 KLOC मतलब कौन सा प्रोजेक्ट है? ये कौन सी कैटेगरी है? बोलिए फास्ट. Embedded. वेरी गुड वेरी गुड. एम्बेडेड. तो बट उन्होंने क्या किया है यहाँ पे? आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द एफर्ट्स एंड द डेवलपमेंट टाइम फॉर each of the 3 models, that is organic, semi-detached and embedded. You have to calculate the how much efforts is required to complete the project, which would be your organic, semi-detached and embedded. Are you getting? ये Yes, sir. एम्बेडेड का है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि तीनों जो टाइप है आपके, जो तीनों कैटेगरी है प्रोजेक्ट की, उसके लिए आप बताओ कितना एफर्ट लगेगा. तो आपको खाली पुट करनी है. ऑर्गेनिक मोड के लिए कितना लगेगा, तो ये फार्मूला है ऑलरेडी. उन्होंने 400 KLOC दिया है, इसका आपने एफर्ट्स कैलकुलेट किया. ये एफर्ट्स की वैल्यू खाली यहाँ पे डेवलपमेंट में इसमें डाली. ऑर्गेनिक का एफर्ट्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया. सेमी डिटैच का यहाँ पे एफर्ट्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया. एम्बेडेड का एफर्ट्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया. सो this type of numerical question may be asked in a exam. Okay, then second stage intermediate model है कि नहीं. कॉस्ट को या एफर्ट्स को हमें कैलकुलेट करने के लिए करना है. तो देर आर 3 stages. फर्स्ट वन बेसिक मॉडल, सेकंड वन दैट इज इंटरमीडिएट मॉडल, एंड थर्ड वन दैट इज क्या है? थर्ड मॉडल बताइए फास्ट. डिटेल्ड मॉडल. Detailed model, basic model, intermediate model and detailed model. So we can see what is intermediate model. अभी intermediate model में क्या होता है? There are in this particular intermediate model that Bohem proposed some attribute. So on that particular attribute you can calculate or you can estimate how much cost is required to complete the particular project. The first attribute, that is product attribute. अभी product attribute में क्या होता है? required software reliability extent, size of the application database, उसमें database की size कितनी है, the complexity of that particular product. अगर product की complexity ज़्यादा है then the cost उसकी high हो सकती है. So this particular attribute affect the cost of that particular project. Means the you can say the PM also affect, time also affect and efforts also affect if you focus on this particular product attribute. अभी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कौन सा है? रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एक्सटेंट, साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेटाबेस. डेटाबेस की साइज कितनी है? अगर डेटाबेस बहुत बड़ा होगा तो एक्चुअली उसका एफर्ट्स बढ़ेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, है क्या नहीं. कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर. अगर सॉफ्टवेयर आपका बहुत कॉम्प्लेक्स है, एट दैट टाइम आल्सो यू कैन से
the efforts required to complete that particular project also high, the time required to complete that particular project is also high. So you have to focus on this type of particular attribute, that is product attribute. Second one, hardware attribute. This particular hardware attribute also affect the cost of that particular project. So what are those hardware attributes? So runtime performance constraints, memory constraints, the volatility of the virtual machine environment, and the required turnabout time. So these are some of the attributes which will affect the cost, which will affect the cost of the particular project. Then पर्सनल एट्रीब्यूट. अभी पर्सनल एट्रीब्यूट कौन से है? अभी पर्सनल एट्रीब्यूट किसके हम ये करेंगे, फोकस करेंगे? टू whom we have to focus the different attribute. So we have to focus the project manager. What is his analyst capability? उसकी analyst capability कितनी है? उसने ठीक तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया है या नहीं है? So analyst capability of that particular project manager, software engineering capability of that particular project manager, application experience, how much experience that particular project manager have, then programming language experience, उसकी programming language का experience है या नहीं है, ये भी क्या है? These are the different personal attribute which will affect the cost of particular software. Then next attribute, that is the project attribute. So use of the different software tools. What are the different tools you are going to use to develop the software or to develop that particular application, which will also affect the cost of particular project. Then application of software engineering methods. What are the different methods you are going to apply of that particular software engineering, so that it will affect the cost of particular project. So आपको ये सब देखना है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका एनालिसिस कैपेबिलिटी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, प्रोग्रामिंग नॉलेज का उसका एक्सपीरियंस कितना है, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस कितना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी उसकी कितनी है. अगर प्रोजेक्ट की बात किए तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. उसके लिए कुछ अलग टूल्स है क्या, उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स लगते हैं क्या जो आपको मार्केट से परचेस करने पड़ेंगे टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो यू हैव टू focus on different type of attribute, so it will affect the cost of particular project. So this is the cost drivers and the rating. आपको ये दिखाई दे रहा है टेबल? Yes, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. मुझे आप ए देते जाओ, रिस्पॉन्स देते जाओ, तो मुझे समझ में आएगा आप है वहाँ पे. देन डिटेल्ड कोकोमो मॉडल, थर्ड स्टेज दैट इज डिटेल्ड कोकोमो मॉडल. ये क्या होता है डिटेल्ड कोकोमो मॉडल? सो इन डिटेल्ड कोकोमो मॉडल you are going to each and every phase of SDLC. हर फेज में कौन से एक्टिविटी को, कौन से प्रोसेस को कितना एफर्ट्स लगता है, कितना टाइम लगता है, ये आप कैलकुलेट करते हो. मीन्स इन एवरी फेज ऑफ दैट पर्टिकुलर SDLC you are calculating how much efforts, how much the time is required to complete that particular phase. The first phase, that is planning and requirement. प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट के लिए कितना एफर्ट्स लगेगा, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर कोकोमो मॉडल, बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर कोकोमो बेसिक मॉडल. देन सिस्टम स्ट्रक्चर के लिए कितना एफर्ट्स एंड कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए कितना लगेगा, मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट के लिए, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट के लिए, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल के लिए. So you are summarize all these particular efforts and particular time required. So the detailed model use various efforts multiplier for each cost driver property. So in detailed COCOMO, the whole software is differentiated into the multiple modules, and then we apply the COCOMO in various model to estimate the efforts and the sum of the efforts. So this way you can
calculate the cost which is required to complete the particular project. So it may be a cost, it may be a efforts, or it may be a time to require to complete that particular project. So the effort is determined as a function of program estimate, and a set of cost drivers are given according to every phase of that particular software life cycle. Okay. So today we stop here and we have the test on chapter number first. मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा गूगल फॉर्म. ओके, कितने स्टूडेंट है अभी? $29 only. Okay, are you getting? फिजा, यस, सबने बोलिए मुझे. अभी अपने टेस्ट है. Yes, sir. फिजा, मेघा, मानसी, ममता, गौरव, दीपाली. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं अपना जो Yes, ग्रुप sir. है, एसपीएम का ग्रुप है, मैं उसमें अभी लिंक भेजूंगा. वो आपको ऑनलाइन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सबमिट करना है. ठीक है? यस सर. Yes, sir. 11 बजे आपका रिस्पांस लेना मैं बंद कर दूंगा. ओके. ओके सर. अगर इस Okay, sir. और एसपीएम में आने के बाद आपने देखने के बाद मुझे एक्नॉलेज करिए व्हाट्सएप पे कि आया है, हमने देखा है, और स्टार्ट योर एग्जाम इमीडिएटली. ओके, चालू रखिए फ़ोन. मैं विद इन अ सेकंड आई विल ड्रॉप यू द क्वेश्चन पेपर इन अवर ग्रुप दैट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. देखिए आया क्या, बताइए मुझे. आपके ग्रुप में आया है? मैंने भेजा है, आया है? यस सर. Yes, sir. ओके ओके ओके, स्टार्ट योर एग्जाम नाउ. 11 बजे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा. 20 मार्क्स का है एग्जाम अपना. 11 बजे ऑटोमेटिकली रिस्पांस लेना मैं बंद कर दूंगा. स्टार्ट. सो मैं यहाँ पे लीव करता हूँ.